In this module, we shall discuss some more examples regarding isomorphic binary structures. Is phi from Z to Z given by phi of n equal to 3n for some integer n an isomorphism? Here two things are different. अगर आप कंसीडर कर रहे हैं फाई की आइसोमॉर्फिज्म को तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो बाइनरी स्ट्रक्चर्स हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है. तो ये मैप पे डिपेंड करेगा कि आप मैप को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं. तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी मैप्स विच आर फ्रॉम Z टू Z बट डू नॉट एस्टेब्लिश आइसोमॉर्फिज्म. और इसी तरह आप Z से Z में इस केस के अंदर आइसोमॉर्फिज्म एस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर आप अपनी मैप को थोड़ा सा रीस्टेट कर लें. Z from phi from Z to 3Z and it is given by phi n equal to 3n, then it would provide you an isomorphism. Phi from Z to Z, which is defined by phi n equal to 3n. First we see that phi is whether 1 to 1 or not. और जैसा कि आपको मालूम है कि हम अप्लाई करेंगे डेफिनेशन को 1 to 1 फंक्शन की. इफ द इमेजेस आर इक्वल वी टेक टू एलिमेंट्स m and n in the set of integers and we assume that their images are equal. Then by definition of phi it implies that 3m equal to 3n, it will give us m equal to n. So it means that phi is 1 to 1. Now we choose an element from codomain Z and we have to see that can we find every element in the codomain the pre-image of that element. So we take 5 in codomain Z and we have to solve this equation. There exists m such that phi m equal to 5 and by definition we know that phi m equal to 3m and in this way we shall get the value of m equal to 5 by 3 which is not an integer. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास जो 5 है उसकी प्री इमेज मौजूद नहीं है. तो इस तरह और कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेजेस हमारे पास यहाँ पे अंडर दिस डेफिनेशन नहीं आएंगी. तो फौरी तौर पे आप गैस कर सकते हैं कि जो एलिमेंट्स 3 के मल्टीपल में नहीं है उनकी प्री इमेजेस वी कैन नॉट फाइंड. इज 5 फ्रॉम Z to Z डिफाइंड बाय phi n equal to 3n homomorphism. To check the condition of homomorphism, we shall take two elements m and n in the domain Z and we add them and then we shall apply phi over this and we shall get by definition 3m plus n within bracket, and by distributive property of real numbers we shall obtain 3m plus 3n which is equal to phi m plus phi n by using the definition of phi in the reverse direction for every m n belonging to Z. So in this way we see that phi is homomorphism but phi is not an isomorphism. और इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आपके पास Z under addition is not isomorphic to Z under addition. तो आपके पास बहुत सी मैप्स इस तरह की आ जाएंगी जो कि आपके पास हो सकता है कि आइसोमॉर्फिज्म ना हो. लेकिन आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हमें जस्ट एक इस तरह की मैप चाहिए, एक सेट से, एक ग्रुप से, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से दूसरे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि वो आइसोमॉर्फिज्म एस्टेब्लिश कर रही हो. तो उस वे में इस तरह से आप कह सकते हैं कि द टू बाइनरी स्ट्रक्चर्स आर आइसोमॉर्फिक.
Now we shall consider some more examples. We define phi from z to z by phi n equal to n plus 1, and we want to check that whether phi is an isomorphism or not. और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि फाई की आइसोमॉर्फिज्म की बेस पे आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपके पास बाइनरी स्ट्रक्चर्स आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं हैं। ये उस सूरत में आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि अगर आपको एक फाई ऐसा मिल जाए, ऐसी मैप मिल जाए दो बाइनरी स्ट्रक्चर्स के दरमियान में जो कि आपके पास आइसोमॉर्फिज्म एस्टेब्लिश कर रही हो, तो उस केस में आपने अगर शो करना है कि टू बाइनरी स्ट्रक्चर्स आर आइसोमॉर्फिक, तो उस केस के अंदर ये वैलिड होगा। अगर कोई मैप आप इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं जो कि आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगी, तो इट डज नॉट मीन दैट द टू बाइनरी स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। नाउ वी फर्स्ट चेक द 1-to-1 condition. Images are equal, phi m equal to phi n, and we applied the definition of phi, and we shall get m plus 1 equal to n plus 1. In this way we obtain m equal to n. Therefore phi is 1-to-1. Now we see that whether phi is onto or not, we have to pick an element from the codomain Z, and we take an arbitrary element n in the codomain Z. Then there exists n minus 1 in the domain Z, such that the image of n minus 1 equal to n minus 1 plus 1 by definition of phi n, and in this way we shall obtain n. So we see that pre-image of every element n in the codomain Z is n minus 1. Therefore phi is onto. Now we show the property of homomorphism. Phi m plus n would give us m plus n plus 1. On the other hand, if we find phi m plus phi n, we shall obtain m plus n plus 2. It means that the homomorphism condition is not satisfied under this definition of phi. Therefore, phi from z to z given by phi n equal to n plus 1 is not an isomorphism. We pick one other example. Is phi from q to q? Here q is set of rational numbers defined by phi x equal to x over 2 for x belonging to q. We have to see whether phi is an isomorphism. We take first images equal. To prove the condition of 1-to-1, we apply the definition of phi. We shall get x over 2 equal to y over 2. It implies that x equal to y. Therefore phi is 1-to-1. Now we have to check that whether phi is onto. To establish that phi is onto, we have to pick an arbitrary element from the codomain, and we have to find the pre-image of that element. और अगर आप ये से एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते तो फिर आपको काउंटर एग्जाम्पल देनी होगी, कोई ऐसी एग्जाम्पल फाइंड करनी होगी कि आपके पास कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए आपको जिसकी प्री इमेज डोमेन के अंदर ना हो। तो इस केस में हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। सो वी टेक एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट y in the codomain Q. There exist 2y in the domain Q such that when we apply the definition of phi over 2y, we shall obtain 2y over 2 which is equal to y. It means that every element in the codomain has pre-image in the domain.
So phi is on 2. Now we have to check that whether phi is an homomorphism or not. Phi of x plus y equal to x plus y over 2, which is equal to x over 2 plus y over 2, and we can write it in this way by using the definition of phi in the reverse direction, phi x plus phi y. Therefore, the condition of homomorphism is satisfied in this case, so phi is an isomorphism. तो अगर आपने चेक करना है कि क्या टू बाइनरी स्ट्रक्चर्स आइसोमॉर्फिक हैं, तो आपको जस्ट एक मैप ऐसी चाहिए जो कि आइसोमॉर्फिज्म एस्टेब्लिश कर रही हो Q और Q के इन बिटवीन. तो जैसा कि आपको मालूम है कि आइडेंटिटी जो है वो ट्रिवियली आप देख सकते हैं कि वो आइसोमॉर्फिज्म एस्टेब्लिश करेगी. वो 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी आइडेंटिटी मैप आपको दे देंगे. नाउ वी are considering some more examples. We proved that the binary structure set of integers under multiplication and set of positive integer under multiplication are not isomorphic. One can see that set of integers and set of positive integers have cardinality alif null. So there are lots of one-to-one function mappings from Z onto Z plus. In binary structure Z under multiplication, there are two elements x such that x dot x equal to x, namely 0 and 1. लेकिन Z plus के अंदर सिर्फ ऐसा एक ही एलिमेंट है और वो 1 है. So it means that Z plus dot is not isomorphic to Z dot.